Hello and welcome to my channel Desified Ummi. So today I am going to discuss with you that how you can pass your UK embassy interview for your tier 4 study visa. Usually the UK embassy calls you for an interview when you are applying for your tier 4 study visa and they ask you some questions to check your credibility. So आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो तमाम क्वेश्चंस जो कि वो आपसे पूछ सकते हैं आपके एम्बेसी इंटरव्यू के अंदर और आपने उसको किस तरीके से आंसर करना है। कुछ टिप्स भी आपके साथ मैं एक और वीडियो में शेयर करूंगी बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सब कुछ इस एक वीडियो में शेयर करूं। तो मैं इस टॉपिक को यानी कि 2-3 वीडियोस के अंदर डिवाइड करूंगी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं एंड देन बेस्ड ऑन द फीडबैक आई विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ यू कैन आंसर देम, सो व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स दैट यू कैन गिव। और ऑल्सो एक और वीडियो में मैं आपके साथ अपनी टिप्स शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को टू गिव परफेक्ट आंसर्स और किस तरीके से आप अपने चांसेस जो हैं उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं टू पास द एम्बेसी इंटरव्यू। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं कि यूके एम्बेसी के अंदर जब आप अपनी एप्लीकेशन देते हो वीज़ा एप्लीकेशन तो वो आपको एक डेट देते हैं जिसके ऊपर आपने जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो सेम डेट पर होता है। जैसे कि मैंने जब दिया था तो द डे आई वेंट देयर फॉर माई बायोमेट्रिक्स साथ ही मेरा इंटरव्यू भी स्केड्यूल्ड था और मेरा इंटरव्यू वहाँ पर हुआ था। तो आप लोगों का भी इस तरीके से हो सकता है या फिर वो आपको अलग से किसी दिन भी बुला सकते हैं जस्ट फॉर द इंटरव्यू। बट मोस्ट प्रॉबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है बिकॉज क्या होता है कि एक छोटी सी भी आपकी गलती जो है वो आपको इस स्टेज पर जाकर रिजेक्ट करवा सकती है, वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं देने से और आपकी सारी मेहनत जो है वो उस तरीके से वेस्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप एक पेपर और एक पेन ले लें और अपने साथ रखें और तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लें बिकॉज ये सारे सवाल मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और तमाम डिफरेंट स्टूडेंट्स जो मुझसे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं उस तमाम से मैंने ये की क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। 30% क्वेश्चंस कुड बी अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनल सिनेरियो, लेकिन 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे इन सवालों में जो मैं आज आपको बताऊंगी जो कि एम्बेसी आपसे लाजमी पूछेगी और अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप अपने लिए एक पेपर पेन का अरेंजमेंट करें और देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली और क्विकली बता दूं कि वीज़ा इंटरव्यू किस तरीके से होता है। तो आप जब एम्बेसी के ऑफिस जाओगे या वीएफएस के ऑफिस जाओगे तो वो आपको एक अदद कैबिन के अंदर भेजेंगे, उसके अंदर आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, आप हेडफोन्स लगाओगे और जैसे एक स्काइप कॉल होती है उस तरीके से बिल्कुल स्काइप कॉल की तरह से आपका लाइव इंटरव्यू होगा ऑनलाइन और यहाँ यूके से बैठकर एम्बेसी ऑफिस से आपको कोई भी पर्सनल उनका कांटेक्ट करेगा और वो वहाँ पर मौजूद होगा जिसको आप वीज़ा इंटरव्यूअर कहते हैं और वो वीज़ा इंटरव्यूअर आपसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आस्क करना शुरू कर देगा। वो पहले आपसे पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल, आर यू रेडी, एंड देन वंस यू टेल देम दैट येस आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट देन दे विल स्टार्ट योर इंटरव्यू। और यूजुअली ये इंटरव्यू जो है ये 15 से 20 मिनट का होता है। कुछ स्टूडेंट्स का इससे ज़्यादा टाइम का भी हो सकता है और कुछ का इससे कम का भी हो सकता है। मेरा वीज़ा इंटरव्यू सिर्फ 6 मिनट का हुआ था और आई वॉज वेरी लकी इन दैट आस्पेक्ट। मुझसे उन्होंने सिर्फ 6 to 7 क्वेश्चंस आई थिंक मे भी पूछे थे, दैट्स ऑल। कोई ज़्यादा मुझसे उन्होंने क्वेश्चनिंग नहीं की थी। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर करना होता है कि वो आप पे उनका कॉन्फिडेंस हो जाए और वो आपको फिर इतना ज़्यादा ग्रिल नहीं करते। अगर आप आंसर्स में थोड़ा सा भी उनको लगे कि आपको उनको मज़ीद ग्रिल करने की ज़रूरत है तो वो आपसे फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और आपका वीज़ा इंटरव्यू फिर ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। मैं आपसे यही कहूँगी कि वीज़ा इंटरव्यू जो है एम्बेसी का वो बहुत बहुत क्रूशल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लें क्योंकि हमारे क्या होता है स्टूडेंट्स समझते हैं कि कैश लेटर आ गया तो उसका मतलब है कि वीज़ा भी कंफर्म है। ऐसा नहीं है। वीज़ा इंटरव्यू आपका एम्बेसी
एम्बेसी ने कंडक्ट करना होता है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एंड योर कैस्ट डिपार्टमेंट। तो एम्बेसी अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगी दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, तो वो आपको वीज़ा इशू नहीं करेंगे। और उनका इंटरव्यू का मकसद बेसिकली 3 चीज़ों पे आपको असेस करना होता है। उन 3 चीज़ों में वो फर्स्ट आपको चेक करते हैं कि आप जेन्युइन हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। दूसरा, वो आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए टेस्ट करते हैं। और तीसरा, वो आपको चेक करते हैं कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, कि आप किस किस्म के इंसान हैं और आप पर्सनल इंटेंशंस क्या रखते हैं स्टडी के हवाले से और वहाँ यूके में स्टे और वापस आने के हवाले से। तो ये 3 चीज़ें बेसिक कैटेगरीज होती हैं जिस पे वो आपको चेक करते हैं। तो आप इसको लाइटली मत लें, बहुत ज़्यादा तैयारी करें। और इसी के लिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो वीज़ा प्रोसेसिंग के फेज़ में जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगा। आसानी के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं जो उनको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और आप के फ्यूचर के गोल्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे एम्बेसी लाजमी पूछेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल क्वेश्चंस के साथ। पर्सनल क्वेश्चंस में वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, ये सारी चीज़ वो आपसे पूछेंगे, तो इसके आपने जवाब देने हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं आपके अपने बारे में, और इसमें कोई ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं लगता। नेक्स्ट, वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उसमें वो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछ सकते हैं उसमें होता है कि वाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, what other universities have you considered while you made your decision। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि which is the location of your university, in which city your university is in, which part of the UK is that, what did you know about the city in which your university is in। ठीक है, ये तमाम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि how did you choose this university, how you get to know about this university, what is your university's full address। ठीक है, ये वो आपसे पूछेंगे। इस किस्म के तमाम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी लोकेशन कहाँ है और आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, ये वो आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी होती है कोर्स के बारे में, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। इसमें सबसे पहले सवाल वो आपसे ये करेंगे कि विच कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी, कि आपको अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंड देन दे विल आस्क यू दैट व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, what other courses have you considered। Next, they will ask you about some of the key modules that you are going to study in this course and explain them, so you have a good knowledge of all the different modules that are there in your course program। And they will also ask you about your course start date and your course end date, so remember the precise date. Don't just say that October 2022, just remember the precise date, that 2nd of October 2022, or my course end date is 11 May 2025। So just be precise. Next, they can ask you about your previous knowledge, like what have you done in previously. So they can ask you what degree you have already done in your home country, what are the key major courses that you have studied in that, explain some of them, what were your grades। They can ask you for a grade or marks of a specific module, that what were your grades in mathematics or anything like that। They can ask you about the dates you graduated, the dates about your degree program ended previously। You can also ask about the college and the city in which your college was in। So just refresh your memory about your college and all of the modules that you have studied, and what were your favorite ones, what are the key ones, what were your marks and grades। Just prepare for everything. They can ask you anything there. Next, they will ask you about your future goals. So the major question that they are going to ask you definitely is that, are you going to stay in UK or are you going
to be back in your home country after you finish this degree. So how you are going to answer that, I will tell you in the next video. But for now, just remember that this is the key question, and they are definitely going to ask you that. They asked me that as well, that what are your future plans? Are you going to stay in UK, or are you going to come back to Pakistan? So remember that. Other than that, they can ask you how much you can earn after doing this degree. What are your future goals? Do you want to do a job, or do you want to do a business? What kind of jobs you can do? What kind of businesses you can do after doing this degree? How much salary you can earn after having this degree? What impact it is making on your future career goals? So these are all the things that they can ask you in your future aspirations. So now at the end of this video, I am going to share some of the important questions from different categories that they are going to definitely ask you. It doesn't mean that all the questions that I have told you before this are not important. There are some of the very important questions in there, like why you choose this course, why this university, what other universities have you considered. All of these are important, and they are going to ask you that 100%. So prepare all of these questions. These are the most important ones that I have found from my personal experience and all of the experiences of other students who are sharing them with me. So prepare all of them, and any other thing that comes to your mind, prepare that, because the more you prepare, that's better. So now for the important questions. The first one is, why do you want to study this course? Next one is, what do you know about the city you are going into? That may be Glasgow, Birmingham, London, Manchester. What do you know about that city? So you have to tell that that city is very vibrant and it has a dynamic, population. What attracts you toward that city? So tell them that. Next, they can ask you about your accommodation. Have you arranged an accommodation for yourself in UK? What is the address of that accommodation? What kind of accommodation is it? How you are going to travel from that accommodation to your university? How much is your distance from that university? Is it going to take you a long time to travel there? You can say that my accommodation is just 15 minutes by train from my university, or just 10 minutes walking distance from my university, or anything like that. So you must have a good information of your accommodation address, where you are going to stay, what route, like are you going to take a bus, are you going to take a train from your accommodation to your university? You should search all of that. Do your research. Next, if you have a study gap on your resume, like I had a study gap on my resume of 5 years. I started doing my master's again after 5 years of my bachelor's. So they asked me, explain your study gap, why there is a study gap on your CV, what were you doing in those 5 years, and why you considered to come back to academia after all of that break. So be prepared for these kind of questions. If you are switching fields, if you did engineering before and now you are going to study business, they are going to ask you why you are switching fields, why you considered it to be important to switch fields now. So you must have a logical reasoning and answer for all of that. Next, they are going to ask you about your funding. Explain your source of income, how you are going to support yourself there, who is financially supporting you for doing this degree. Is it either yourself, your husband, your spouse, your parents? If you are financially dependent, or if you are financially independent, you must know that how your study is getting sponsored, who is sponsoring it, and how you are going to arrange your finances. So they see that you have placed a financial statement with your visa application, but they are going to ask you that what are the sources from which you have arranged all of this amount, where this money come from. So they are going to ask you that. I hope that this helps you. In the next video, I am going to share some of my tips for success, and the answers for all of these questions, and how you can answer them in a better way. I hope today's video is useful for all of you who are in the visa processing phase right now and are preparing for your visa interview, or are going to give your interview in coming days. Good luck, because a little mistake can get your visa refused. So be prepared, do all your research and work. Stay tuned, stay connected. Thank you to all for subscribing my channel. Keep subscribing, keep supporting, keep liking the content, and I will see you guys in another video. So take care. Bye bye.